मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ला इलाहा illallah part 2. So in part 1 we learned that it's kufr to not negate before affirming. So in kalima tayyiba there is negation is foremost and then comes affirmation. So पहले नफ़ी करना है फिर उसकी तौसीक़ करना है. सो नफ़ी पहले तौसीक़ बाद में. अगर आप नफ़ी छोड़ देंगे तो वो कुफ्र होगा. तो इसीलिए ला इलाहा में अगर अल्लाह को भी शुमार करोगे तो ये कुफ्र है, ये यकीनन कुफ्र है. तो और एक जो चीज़ समझे थे हम वहाँ पर वो है गैरुल्लाह का सेटअप शिर्क फिल वजूद है. सो आप ऐसा नहीं कर सकते किसी चीज़ को पॉइंट करके कि ये गैरुल्लाह है. सो सेटिंग अप क्योंकि गैरुल्लाह का होना और खुदा का होना, दोनों का होना और दोनों का एक जैसा होना, ये सब जो है बिल्कुल शिर्क फिल वजूद में आता है. उसका होना और अपने होने में कोई कंपैरिजन है ही नहीं. उसका होना अपना ख़ुद का है, हमारा होना उसका दिया हुआ है. So there is no comparison at all between existence of God and our existence. So if you treat both existences as same, then definitely it's shirk fil wujud. So what is this existence? ये होना क्या है? असल ये होना एक ज़हनी चीज़ है. ये अपने जहन उसके माने देता है. जब आप किसी चीज़ को ख़ारिज में देखते हैं तो जहन क्या करता है, उसकी ज़हनी तस्वीर बनाता है और उसका होने का माना देता है. So when you look at something something outside your mind, your brain actually analyzes the picture and produces two pieces of information. The first one is the mental picture of what you're looking at, and the second thing that your brain tells you is that the thing exists. So that's called cosmic perception. So anyway, so that was in part 1. So in part 2, बहरुल मौलवी अब्दुल क़दीर मोहम्मद सिद्दीकी says ला इलाहा illallah, इलाह खारिज में मौजूद है और मुस्तहिक़ इबादत भी है. ये खुला शिर्क है. शिर्क फिल वजूद है, शिर्क फिल इबादा है, हर किस्म का शिर्क है. तो इसमें जो है ज़रा गौर करें इस जुमले पर, इलाह खारिज में मौजूद है और मुस्तहिक़ इबादत भी है. ये ऐसा क्यों लिखे हैं सर? इलाह खारिज में मौजूद है और मुस्तहिक़ इबादत भी है. ऐसा लिखने की वजह क्या? असल बात यह है कि इलाह के कई माने हैं. इलाह के कई माने हैं. इलाह यानी खुदा कई मानों में इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल किया गया है इस दुनिया में. सो खुदा के क्या क्या माने हैं भाई? खुदा के माने वो है जो हुक्म देता है, जिसका हुक्म चलाता है. ओके, वो हुआ खुदा. और खुदा के माने में आता है जिसका होना यकीनी है, वो भी खुदा है. ओके, खुदा का होना यकीनी है. सो खुदा वो है जो जिसका होना यकीनी है. तो ये भी खुदा के माने हैं. और खुदा के माने में आता है खुदा जो है वो ज़ात है जो मुस्तहिक़ इबादत है. सो ये भी खुदा के होने में आता है. सो बहरलूम हियर राइट्स इलाह खारिज में मौजूद है. सो इलाह के माने कई हैं. ओके, सो और एक इलाह का माना जो हज़रत फरमाते हैं वो क्या है? इलाह जो है मोहताज इलिया मीन्स एंटी डिपेंडेंट. So let me actually explain that a bit in English. So Bahrulum writes here, ilah kharij mein mawjood hai. To consider ilah, to consider God to exist out there, and to consider him as worthy of worship is indeed shirk. Okay, it's shirk fil wujud. To consider God to exist out there in the external is shirk fil wujud, and to consider ilah, God, on top of existing out there, to consider him as worthy of worship, that is shirk fil ibadah. That is shirk, association in ibadah, association in worship. So let's look at this. Why it is so? Why it is so? So ilah comes in many meanings. Okay, there are many meanings of ilah.
There are many meanings in which the word God is used. So God is used in the sense of the one who issues commands. God is also used in the sense of one whose existence is definite. God is also used in the sense of anti-dependent. Anti-dependent means the one who depends on nothing, but everything else depends on him. So God is also used. So God is used. The word God is used in many meanings. So what Bahr Ulum here is saying is to consider God to exist out there, and to consider him, on top of that, to consider him as worthy of worship, is indeed shirk fil hukum. So the essence of all of this is this, okay? The cosmic perception of existence, it's something that our brain creates, okay? So when you look at something that's outside, right, your brain actually gives you two pieces of information. One, it creates a mental picture that it acquires through your senses, and the other thing your brain does, it gives you the sense that the thing exists. Okay, so this thing exists, this perception of existence, right? Now that you have to distinguish that perception of existence of God from the perception of existence of the creation. So you have to distinguish these two perceptions. They are not the same. If you don't distinguish them, then that is association in existence. That is shirk fil wujud. So and then how does the shirk fil ibadah comes into play? Like I was saying, the word ilaha has many meanings. So an anti-dependent, something that that does not depend on anything. If you consider anything else in the world, for example, dollar, right? Dollar is a currency that does not depend on other currencies. Okay, let's say all other currencies are linked to the dollar and they all depend on dollar, whereas dollar as a currency is anti-dependent. Okay, so in that sense, so dollar has become like a ilaha of currencies. Okay, so to consider such ilaha, and then on top of it to consider such ilahs as worthy of worship, is indeed shirk fil ibadah and shirk fil wujud and all kinds of shirk. So that is the main point that Bahr Ulum is making here. So अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं. There is none worthy of worship except Allah. So existence of Allah is यकीनी. खुदा का होना यकीनी है, अल्लाह का होना यकीनी है. उसका वजूद बिज़ात है. His existence is of his own. बिज़ात means absolute existence. His existence is of his own. असली है, ज़ाती है. दूसरे तमाम मुमकिनात का वजूद, all the other possibilities, the existence of all the other possibilities, मखलूक़ात की हस्ती बिल अर्ज़ है. It's a relative existence. So there are two types of existences, bizzat and bil arz. Bizzat means absolute existence, and bil arz is the dependent existence, the relative existence. So our existence and everything that you see with your senses, the existence of all those things, is a relative existence. It's a weak existence. It's a dependent existence. Whereas God's existence is his own. It does not depend on anything else. His existence is absolute. So you need to distinguish between those two existences. Sadaqallahu alazim.